Hello everyone, welcome to my channel Learn with Nisha Ji. We are studying the chapter 10, that is the human eye and the colorful world from class 10 science. So if you have not watched the part 1 of the lecture, I will be sharing the link. You can watch the part 1 also before continuing with this part 2 of the lecture, right? And if you have not subscribed the channel yet, you can subscribe the channel to get regular updates, right? So here we are going to study the refraction of light through a prism. तो आपने रिफ्रैक्शन लाइक लोअर क्लासेस में स्टडी किया है, बेसिक फिनोमेना क्या होता है. अभी हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो जिसे हम बोलते हैं प्रिज्म, तो प्रिज्म के थ्रू कैसे रिफ्रैक्शन होगी उसे स्टडी करेंगे, राइट. सो वी कंसिडर अ ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म. इट हैज टू ट्रायंगुलर बेसेस एंड थ्री रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस. ठीक है. अगर हम फ्रंट से देखेंगे ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म को तो वो ऐसा कुछ अपीयर होता है, राइट. नाउ दीज सर्फेसेस आर इंक्लाइंड टू ईच अदर. एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल सर्फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द प्रिज्म, राइट. जैसे ये वाला एक सरफेस हो गया, ये वाला एक सरफेस हो गया, तो एंगल ए जो है दैट इज द एंगल ऑफ द प्रिज्म, राइट. तो इसमें आप देख सकते हो एक रे है पीई, इट इज द इंसिडेंट रे. ठीक है, पीई हमारी इंसिडेंट रे है, प्रिज्म पे आ रही है जो. ईएफ इज द रिफ्रैक्टेड रे, ये जो ईएफ फॉर्म हो रही है, ठीक है. एंड एफएस इज द इमर्जेंट रे, इसको एफएस को इमर्जेंट रे बोलते हैं. ठीक है, तीन टाइप्स ऑफ रेज हो गई इसमें. You may note that a ray of light is entering from air to glass at the first surface AB. ये AB surface है, यहाँ पर एयर है और यहाँ पर ग्लास है, तो एयर टू ग्लास एंटर हुई है. ठीक है, तो लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल. ठीक है, तो यहाँ पे इस सरफेस का एक हमने नॉर्मल ड्रॉ करा एन एन डैश, तो नॉर्मल की तरफ ये रिफ्रैक्ट हो गई, राइट. एट द सेकेंड सर्फेस AC, ये हमारा सेकेंड सर्फेस है AC, लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम ग्लास टू एयर. तो यहाँ पे ग्लास है और यहाँ पे एयर है, ग्लास टू एयर जा रही है, तो इट हैज वेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल हमने ड्रॉ करा है, MM डैश नॉर्मल है, तो नॉर्मल से अवे चली गई हमारी रे, राइट. नाउ we are comparing the angle of incidence and angle of refraction at each refracting surface of the prism. ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, right. Now the peculiar shape of the prism, इसकी शेप कुछ ऐसे होती है, it makes the emergent ray bend at an angle to the direction to the incident ray. ठीक है, this angle is called the angle of deviation. अब देखो इंसिडेंट रे तो इस डायरेक्शन में आ रही थी और जो हमारी इमर्जेंट रे है वो इस डायरेक्शन में चली गई, तो कितने एंगल से बेंट हुई है ये, दिस डी इज कॉल्ड द एंगल ऑफ डेविएशन, राइट. नाउ दिस एंगल डी, ये हमारा यूनिक होता है, इट इज दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस ग्लास प्रिज्म. तो आप इसमें सब देख सकते हो, पीई क्या है, इंसिडेंट रे, ये टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए. ईएफ है रिफ्रैक्टेड रे, एफएस है इमर्जेंट रे, ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. ठीक है, आर जो है हमारा ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ई इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस, और डी जो है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन. So these are all the terms related to this glass prism, right? So next one is dispersion of white light by a glass prism. ठीक है, ये glass prism है, यहाँ से white light beam आई और glass prism ने क्या किया, इसे spectrum में convert कर दिया, विबग्योर में. ठीक है, तो ये हम देखते हैं, the prism has probably split the incident white light into a band of colors. Okay, we note that the colors appear at the two ends of the color band. ठीक है, सीक्वेंस क्या है इसका, वही विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, राइट. तो इससे आप इसका सीक्वेंस याद रख सकते हो इस एक्रोनिम से, विबग्योर से. ठीक है, नाउ द बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम, इसको क्या बोलते हैं, वी कॉल इट स्पेक्ट्रम. ओके, हम इन कलर्स को सेपरेटली नहीं देख पाएंगे, हमें बैंड फॉर्म में ही ये विजिबल होगा, राइट. Something makes each color distinct from the other. Okay, the splitting of light into its component colors, इस phenomena को हम क्या बोलते हैं, dispersion, right. Now so we have seen that white light is dispersed into 7 color components by a prism. ठीक है, ऐसा क्यों होता है, why do we get these colors? See, different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray. ठीक है, अलग अलग एंगल से होंगे.
as they pass through a prism. Red light bends the least, ठीक है, आप देख सकते हो रेड लाइट सबसे ऊपर ही है, ये कम means bend करेगी. Thus, the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. Okay, so it is the band of distinct colors that we see in a spectrum. तो ये हमारी white light basically 7 band of colors में split हो गई क्योंकि सब colors का bending angle different है. और इसी phenomena को हम dispersion कहते हैं. Dispersion is very important from exam point of view, right? So this is a very interesting phenomena. We will see the recombination of the spectrum of white light, right? So Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. Okay. So white light sunlight ही होती है. Okay. अगर आपको white light use करनी है कहीं or using sunlight, it's one and the same thing. It can be split into 7 colors. So he tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. तो मीन्स ही थॉट इन हिज माइंड कि 7 कलर्स में स्प्लिट हो गया, अब मैं एक और प्रिज्म लगाता हूँ तो मैं इसको फर्दर फिर स्प्लिट कर पाऊँ, कुछ ऐसा. ओके, जस्ट एन एक्सपेरिमेंट ही वाज डूइंग. सो हाउएवर ही कुड नॉट गेट एनी मोर कलर्स, राइट. He then placed a second identical prism in an inverted position with respect to the first prism. जैसे फर्स्ट का ट्रायंगल इस तरह है, दूसरे को इन्वर्टेड फॉर्म में रख दिया, ठीक है. Now, this allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism as well. ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, white light आई, split हुई 7 colors में, अब ये 7 colors इस prism पे fall किए, ठीक है. Now they are passing through this. So this allowed all the colors of the spectrum to pass through second prism, and he found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. तो यहाँ से फिर ये means converge हो गए और white light ही मिल गई हमें screen पे. ठीक है. So this observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 colors. तो पहले sunlight आई, 7 colors में split हुई, फिर वो 7 colors फिर merge हुए, recombine किया और white light फिर से form हो गई screen के ऊपर, right? So any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as a white light, right? तो रेनबो क्या होता है, इट इज अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपियरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर. यहाँ आप देख सकते हो ये क्यों अकर होता है, इट्स कॉज्ड बाय डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. ठीक है, रेन शावर के बाद टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट होते हैं. अ रेनबो इज ऑलवेज फॉर्म्ड इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ सन, राइट. Water droplets act like small prisms and they refract and disperse the incident sunlight, then reflect it internally and finally refract it again when it comes out of the raindrop, right? तो ये हम यहाँ पे देख सकते हैं रेनबो फॉर्मेशन में सनलाइट इज एंटरिंग रेनड्रॉप. ठीक है, पहले जब वो एंटर होती है तब क्या होता है इसमें, यू कैन सी व्हाट आर द स्टेप्स, दे रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्शन हो जाएगा. ठीक है, then it will disperse the sunlight. Okay, dispersion से क्या होगा, वो break हो जाता है 7 colors में. ठीक है, and internal reflection होता है और फिर final refraction again. तो उसकी वजह से हमें 7 colors नजर आते हैं. तो बेसिक फिनोमेना क्या यूज होते हैं इसमें, डिस्पर्जन ऑफ लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन. इसकी वजह से डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आए. Now you can also see a rainbow on a sunny day if you look at the sky through a waterfall or through a water fountain. ऐसा generally आप कोई water parks में देख सकते हो. When sun is behind you, तो भी आपको कुछ ऐसे colors नजर आएंगे, right? So now we are studying atmospheric refraction. Okay. So you might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air, okay, rising above a fire or a radiator. ऐसा आपने observe किया होगा, right? तो air just above the fire, it becomes hotter than the air further up. Okay, hot air is lighter, it is less dense, and the cooler air, like if we compare it with the cooler air above it, it has a refractive index slightly less than the cooler air. ठीक है. Now, since the physical conditions of the refracting medium, that is air, are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air, it fluctuates. So this wavering is thus an effect of atmospheric refraction, that is refraction of light by the Earth's atmosphere, right? On a small scale in our local environment, ये हम देख सकते हैं.
Now twinkling of stars is a similar phenomena on a much larger scale, right? तो अब हम twinkling of stars को discuss करेंगे. So it is due to atmospheric refraction of starlight. Okay. The starlight, on entering the Earth's atmosphere, it undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. Okay. And the atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index, क्योंकि refractive index constant नहीं रहता. Okay. Now, since the atmosphere bends starlight towards the normal, apparent position of the star is slightly different from its actual position. Okay. Star appears slightly higher or above than its actual position when viewed near the horizon. आप इसमें diagram में देखो. So apparent star position due to atmospheric refraction, we can see this is the star that we are seeing. Okay, this is the ray path. Okay, so apparent star position is this. Dotted line से show करिए and refractive index is increasing downwards. Okay. Now further, this apparent position of the star is not stationary, but it keeps on changing slightly, since the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary. Okay. Now, since the stars are very distant, they approximate point-sized sources of light. As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye, it flickers. Okay. The star sometimes appears brighter and at other time it appears fainter. So this gives the twinkling effect and this is called twinkling of stars. तो इस पे एग्जाम में जनरली ना रीजनिंग क्वेश्चन आता है तो दैट यू कैन एक्सप्लेन फ्रॉम हियर. So we can see in figure 10.10, we can see atmospheric refraction effects at sunrise and sunset. ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे अभी. Okay, we come on to why don't the planets twinkle. ठीक है, planets they are much closer to the earth. ठीक है, they are seen as extended sources. वो points की तरह appear नहीं होते. So if we consider a planet as a collection of large number of point-sized sources of light, total variation in the amount of light entering our eye from all the individual point-sized sources will average out to zero. Thereby, it nullifies the twinkling effect, right? Then we have advanced sunrise and delayed sunset. See, sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise. Do you know this? जैसे actual sunrise जब होता है हम उससे पहले 2 मिनट ही देख सकते हैं sun को. Okay? And about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. Now, by actual sunrise, we mean the actual crossing of the horizon by the sun. ठीक है? इसमें हम फिगर में देखेंगे एक्चुअल एंड एपरेंट पोजीशंस ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू द होराइजन. तो आप देख सकते हो दिस इज द अर्थ. ओके, समवन इज स्टैंडिंग हियर, ऑब्जर्वर इज हियर. हमने एक और सर्कल बना लिया इसके अकॉर्डिंग. नाउ ये हमारा होराइजन है, दिस स्ट्रेट लाइन. ये सन है, दिस इज एपरेंट पोजीशन ऑफ द सन. यहाँ है सन, यहाँ से रेज आई, देन दिस बिकम्स द एपरेंट वन डॉटेड लाइन से जो शो करा है. देन see the time difference between actual sunset and apparent sunset, it is about 2 minutes. Okay, this you can note it down. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset, this is also due to the same phenomena. तो इसमें भी हमारे रीजनिंग क्वेश्चंस ही बनते हैं, right? So next is scattering of light. Okay, so the interplay of light with objects around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. Blue color of the sky, ठीक है, color of the water in deep sea, reddening of the sun at sunrise and sunset. These are some of the wonderful phenomena we are familiar with. Have you ever observed these beautiful moments? If not, try to observe them. Now, you learned about scattering of light by colloidal particles in previous classes. Okay, so the path of the beam of light passing through a true solution, it is not visible. Okay, however, its path will become visible through a colloidal solution. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसमें size of particles it's relatively larger, बड़ा होता है. ठीक है, तो अब हम basically study करेंगे Tyndall effect. Okay. Now, the Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles.
These particles include smoke, smoke is there, tiny water droplets are there, suspended particles of dust are there, molecules of air are there. Okay. So when a beam of light strikes such fine particles, the path of the beam becomes visible. Okay. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. Now, the phenomena of scattering of light by the colloidal particles, it gives rise to Tyndall effect. आपने क्लास 9 में भी Tyndall effect पढ़ा था. If you don't remember, you can watch class 9 lectures also for science, right? Now, this phenomena is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. So, scattering of light क्या करेगी? It will make the particles visible. Tyndall effect can be observed when sunlight passes through a canopy of a dense forest. वहाँ भी आप देख सकते हो. So here tiny water droplets in the mist scatter light. Okay. Now color of the scattered light, it depends on the size of the scattering particles कि वो कितने बड़े हैं. Very fine particles, they will scatter mainly the blue light. ठीक है. Particles of larger size, they scatter light of longer wavelengths. All right. Now, if the size of the scattering particles is large enough, then the scattered light can even appear white. Okay, तो size पे depend करेगा कि किस तरह हमारी light की scattering हो रही है. Okay. So here comes a very good reasoning question. Why is the color of the clear sky blue? ये क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी बहुत बार पूछा जाता है. आप किसी भी लेवल के इंटरव्यूज देते हो, कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स के इंटरव्यू देते हो, वहां भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. ओके. Now, molecules of air and other fine particles in the atmosphere, they have size smaller than the wavelength of visible light. ठीक है. विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ होती है उससे भी हमारे छोटे साइज के पार्टिकल्स हैं एयर के अंदर. ठीक है. नाउ these are more effective in scattering light of shorter wavelengths. ठीक है, at the blue end rather than light of longer wavelengths at the red end. ठीक है. जैसे अगर आप पूरा पैटर्न देखोगे विबग्योर वाला. ठीक है. यहाँ से V स्टार्ट होता है विबग्योर. ठीक है. VI यहाँ पे ब्लू होता है. तो जो हमारा ब्लू साइड वाला है, इधर जो हमारी वेवलेंथ है वो कम होती है. ठीक है. रेड की तरफ जाते जाते हमारी वेवलेंथ बढ़ जाती है. तो जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो छोटी वेवलेंथ्स को ब्लू एंड वाले को ज्यादा अच्छे से स्कैटर करते हैं एज कंपेयर टू लॉन्गर वेवलेंथ्स एट रेड एंड, इस एंड से. ठीक है. तो अब जो रेड लाइट है हमारी, इट हैज अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन ब्लू लाइट. ओके. So when sunlight passes through the atmosphere, fine particles of air, they scatter the blue color, ठीक है, more strongly than red. तो जो scattered blue light होती है हमारी, that enters the eyes. And if the earth had no atmosphere, atmosphere होता ही नहीं, there would not have been any scattering. तो ये atmosphere की वजह से ही scattering होती है. Okay. So तो sky का color क्या होता अगर atmosphere नहीं होता? Sky would have been black, dark color. Okay. So sky appears dark to passengers flying at very high altitudes. बहुत high altitude पे चले गए आप जहाँ पे ये molecules of air and other fine particles हैं ही नहीं, तो scattering is not prominent at such heights, तो आपको dark ही sky नजर आएगी. जैसे आपने कोई एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड कोई मूवीज देखी हो, तो जैसे जो हमारी स्पेसशिप्स और वो काफी हाइट पे चली जाती है, उसके बाद स्काई का कलर टोटली ब्लैक ही दिखाई देता है. ओके. Now, you might have observed that danger signal lights are red in color. जैसे आप रेलवे से ट्रैवल करते हो या कहीं कहीं पे फ्लाइट से जा रहे हो, तो कहीं पे भी डेंजर का साइन आपको रेड कलर से नजर आएगा. तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक. क्योंकि रेड की वेवलेंथ थोड़ी ज्यादा है ना, दैट्स व्हाई. सो देयरफॉर इट कैन बी सीन इन द सेम कलर एट अ डिस्टेंस. तो ताकि हम दूर से उसे इजीली देख पाए, उसकी स्कैटरिंग लीस्ट है, दैट्स व्हाई इट्स यूज्ड फॉर लाइक डेंजर सिग्नल्स. तो यहाँ से बहुत अच्छे रीजनिंग क्वेश्चंस बनते हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और इंटरव्यूज में भी पुट अप होते हैं. तो ये आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट सिखाए जाते हैं क्लास 10 के अंदर, और ये काफी हाई लेवल इंटरव्यूज तक भी जाएंगे जहाँ पे आपकी ये बेसिक नॉलेज
चेक होती है। तो इन चीजों को अभी ही आप अच्छे से समझोगे, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू थ्रू आउट योर लाइफ, राइट? So these are three questions which are present in the back exercise of NCERT. ये questions generally exam में पूछे जाते हैं. So let's see them one by one. First is why do stars twinkle? हमने अभी ये डिटेल में डिस्कस करा है, twinkling of stars. Through that you try to answer this, okay? Second is like explain why the planets do not twinkle. ये हमने अभी देखा था, planets बहुत सारे छोटे छोटे हम मान के चलें पॉइंट सोर्सेस से बने हैं, ठीक है? तो वो वाला कंसेप्ट हमें इसमें एक्सप्लेन करना है, तो वो ट्विंकल नहीं करते, ओके? एंड थर्ड इज लाइक व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट? क्योंकि एस्ट्रोनॉट बहुत हाई हाइट्स पे चले जाते हैं और वहां पे हमारा एटमॉस्फेयर एक्चुअल में प्रेजेंट नहीं होता, उसकी वजह से स्कैटरिंग नहीं है, तो इट अपीयर्स डार्क। तो ये तीनों ही क्वेश्चंस के कंसेप्ट्स अभी हमने डिस्कस करे हैं। इफ यू डोंट रिमेम्बर, आप इस लेक्चर को फिर से देख सकते हो. ऑल दीज क्वेश्चंस विल बी क्लियर टू यू, राइट? Now let us see a summary of this chapter. So first is the ability of eye to focus on both near and distant objects by adjusting its focal length. इसको क्या बोलते हैं? Accommodation of the eye. बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है, ओके? नाउ smallest distance at which eye can see the objects clearly without strain, उसे क्या कहते हैं? near point of the eye. और least distance of distinct vision, ठीक है? For a young adult with normal vision, ये कितनी होती है इसकी वैल्यू? 25 सेंटीमीटर, ओके? कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स क्या होते हैं हमारे? दे आर लाइक मायोपिया, हाइपोमेट्रोपिया एंड प्रेसबायोपिया. मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस, तो इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना. It is corrected by using a concave lens of suitable power. Hypermetropia, it's farsightedness, image of nearby objects is focused beyond the retina. और इसको करेक्ट कैसे करते हैं? By convex lens of suitable power. And with old age, like eye loses its power of accommodation. उसकी वजह से हमारा presbyopia occur होता है. Okay. Then we learnt about dispersion, that is splitting of white light into its component colors, that is dispersion. And scattering also we studied. Scattering of light की वजह से क्या होता है? Like blue color of the sky can be seen. Okay, so this completes the chapter. So if you have any doubts, you can post it in the comment section. And if you have not subscribed the channel Learn with Nisha Ji, do subscribe it to get regular updates. Thanks for watching.